Numerical questions. Question number 1. Data. The mass hung from a spring vibrate 15 times and 12 seconds. Calculate frequency and time period of vibration. Your mass time system de और वाइब्रेशन की 15 वाइब्रेशन कंप्लीट कई फ्रीक्वेंसी होती है. नंबर ऑफ वाइब्रेशंस 15. number of vibration is 15. Time interval is 2 seconds. 12 second time of the find frequency and time period. Yes. Solution. Frequency is equal to number of vibration per unit time. This implies that f equal to number of vibration 15 divided by 12. Use calculator 1 point something 1.25 1.25 hertz. Now time period equal to 1 over f 1 over 1.25 0.8 0.8 second. second. Question number second. A spring requires a force of 100 Newton to compress it to a displacement of 4 centimeter. What is that spring constant? A force of spring is given which is 100 Newton and displacement is equal to 4 centimeter, which is equal to 0.04 meter divided by 100. Find force constant. Solution. According to Hooke's law, F equal to minus. We will neglect negative sign. This implies that F equal to kx. Dividing both sides by x, k equal to f1. X putting the values. F is 400 0.04. 25,000 Newton per meter. Data. A second pendulum is a pendulum with a period of 2 seconds. How long must a second pendulum be on the earth and moon where G is given? What is frequency of second pendulum at earth and moon? Second pendulum, time period of second pendulum is given 2 seconds. Second pendulum, अगर pendulum भी चला रहे time period 2 seconds. Value of G of the earth is value of G of the earth is
9.8 1 square. 1 meter per second square, and value of G on the moon is 1.6 2. 1.62 meter per second square. Find length Yes, sir. how long must a pendulum on the earth? What is frequency of the second pendulum at earth and moon? How long must a second pendulum be on the earth? M molecule or moon molecule. What is frequency of second pendulum at earth and moon? L molecule will leave. Second pendulum pa moon o pa earth bali time period same day solution T equal to 2 pi under radical sign L1 G. This implies that taking square on both sides 4 pi square L1 G. This implies that L equal to dalam tasarruf A dalam tafsir T square G1 over 5 square. Length second pendulum length बहुत चेंज को होगा ना मतलब second pendulum बता देगा ना कि मून अंदर का second pendulum की टाइम पीरियड अंदर है ना और टाइम पीरियड में कांस्टेंट साथ length पर चेंज को हो रहा है चेंज को हो तो सीधा the length on the earth equal to T square G E over 4 pi square. The length on the earth is T is 2 square 9.8 over 4 multiplied by 3.14 square is equal to 4 multiplied by 9.8 over 4 multiplied by 9.8. 1 बची राशि 1 मीटर का लेंथ शो अर्थ मान लो उसको मून पर इसमें लेंथ बता रहे हैं लेंथ ऑन मून P square G M over 4 pi square then 2 square multiplied by 1.62 4 multiplied by 3.14 square. Yes. LM is equal to 4 multiplied by 1.62 over 4 multiplied by 9.8. So that तकसीम के प्रकार कैलकुलेटर बनेगी. Length on the moon is the second pendulum लंबाई सूत्र प्रकार है 0.1653. हाँ 0.1653. 0.6 16. 60 53. मीटर 16 is right. 0.1653. Yes. सेंटीमीटर में क्या होगा सौ के बाजार हुआ सेंटीमीटर मीटर के राज हुआ और सेंटीमीटर के राज हुआ फ्रीक्वेंसी मालूम कही सेकंड पेंडुलम दे जो टाइम पीरियड को चेंज तो सेकंड पेंडुलम को टाइम पीरियड पे उन्हें व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम एट अर्थ एंड तो दौर वसी भी कर फ्रीक्वेंसी को
सिर्फ फ्रीक्वेंसी about this is f equal to 1 1 f equal to what frequency बस से this is frequency वाली चेंज की 0.5 hertz. लगाओ पार की जो लगाओ तो मूव this is Yes. up over calculate speed and frequency of a propeller on the plane that it completes 250 cycles in 5 seconds. प्रोपेलर एरोप्लेन ची कम पकेरी अगर 250 साइकिल कंप्लीट करी 5 सेकंड की फिर 300 एम्पीयर मालूम है नंबर ऑफ साइकिल्स टू 50 का ना Yes. 250 cycles completed 5 seconds. 250 cycles in 5 seconds. Yes. At 5 frequency and time period. F equal to number of vibration, number of time period. 250 or 5. 50 hertz. 250 hertz. Find time period 1 over f. 1 over 50 more 0.01 0.02 second. That's how it should. Data water waves with wavelength 2.8 meter produce a reflecting travel with speed of 3.8 meter per second. What is frequency of straight wavelength produced here? Wavelength is given, the water wave is 2.8. Wavelength 2.8 meter wave. Now water wave wavelength is oh speed is 3.8 meter per second. 3.50. Find frequency solution. V equal to f lambda. Yes. This implies that f equal to u over lambda. F equal to 3.8 over 2.8. 1.357. 1.3 hertz. Betul biasa. The distance between successive tests a series of water wave is 4 meter. No, that naka wavelength is 4 meter wavelength with lambda is 4 meter. Lambda 4 and first travel 9 meter and 4.5 seconds. The speed अनुसार 9 over what 9 over 4.5 meter per second. That was 2.2 meter only
2.2 Only 2, sir. सिर्फ 2 2 मीटर पर सेकंड तो इस तरह should show what is frequency of the waves if warranted connection system solution use it use it solution V equal to F lambda is applies that V F equal to U over lambda okay the value is 2 speed is 2 width is 4 Is equal to 0.5 0.5 hertz. hertz. ऐसे में क्वेश्चन ये नहीं रहता है क्वेश्चन नंबर 7. उसके बाद लास्ट क्वेश्चन A station broadcasts at AM radio wave whose frequency of 1230 multiplied 10 power 3 hertz by kilohertz है क्या 10 power 3 यो रेडियो स्टेशन फ्रीक्वेंसी है 1230 multiplied by 10 power 3 hertz ये फقط ये पालिश कहीं या बस पता मजे पे लीवा Numerous materials and calculation too. And FM radio, double FM radio, and FM radio, whose frequency is the megahertz से the F1 shoe, the frequency F2 shoe, frequency F2 shoe सरला 91.9 6 hertz megahertz megahertz find distance between adjacent crests in each wave yes a station broadcast and AM waves with frequency is given and FM waves with frequency is also given find distance between adjacent crests in each wave adjacent crest commence के distance wavelength करेंगे Yes, sir. find हाँ देखो वो स्पीड है ये पता चुन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड चले आ रहा है सारा कांस्टेंट की स्पीड अप्लाइड बराबर है वेव रेडियो स्टेशन चिकन वेव्स ब्रॉडकास्ट कई दादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और जब स्पीड अगर ये कब स्पीड चल रही है किताब की जीवन में रहेगा प्लस बता दीजिए 3 multiplied by 10 power 8 मीटर wavelength मालूम के lambda 1 solution V equal to F lambda. This implies that lambda equal to V over F. This implies that lambda 1 equal to V over F1. This implies that lambda 1 equal to 3 multiplied by 10 power 8 and frequency F1 is 30 multiplied by 10 power 3. Now so 10 इकारों की 3 डिवाइड के पर 12 30 मारी और multiplied by 10 power 8 multiplied by 10 power -3. So that divide के 243 दा हाँ अगर दा 3 पर डिवाइड 3 plus 1 3 डिवाइड में पर 12 30 मारी पर 12 30 में डिवाइड का 0.0024 हाँ 0.00 243 3 बस पर डिवाइड और 10 पावर सॉल्यूशन 5 तो 64 रहेगा और डबल शिप आए
decimal point apa wis बस मुका बाद decimal point खत्म करें तो 3 देगा ना Yes. 1 2 3 4 5 के 5 का शुरू होता बाहर 2 party 3 meter Meter. Yes. review what is 2 jadi frequency nya sama 91.9 multiplied by 10 power 6 और सुना सुनो redivide के 91.9 by 10 power 8 और multiplied by 10 power minus 6 क्या था divide के 0.0326. 0.0326. 0.0326 multiplied by 10 power 8 plus 6 to 2 decimal point के भावी से अब हट 3.26 लिखते हैं ना decimal point के तरह होगा 3.26. मीटर जगह ये अप